जी तो तमाम दोस्तों, ये लाइव स्ट्रीम हमने शुरू की है ताकि हम एफओएमसी को ट्रेड कर सकें।
जी तो तमाम दोस्तों जो भी भाई देख रहे हैं तो स्ट्रीम को शेयर करो ताकि आपको मज़ीद मैं एनालिसिस दूँ एफओएमसी की। ठीक है, तो स्ट्रीम को शेयर करते जाओ। जैसे ही 10-15 या 20 मेंबर आ जाते हैं तो फिर हम मज़ीद मार्केट को एनालाइज करना शुरू कर देंगे। कहीं पे भी आपको अगर स्क्रीन रुकती हुई नज़र आए या फिर आवाज़ समझ ना आए मेरी तो फिर आपने कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, और ताकि मैं फिर आपको प्रॉपर बता सकूँ कि क्या करना है, रिज़ल्ट कैसा आ रहा है स्ट्रीम का ये भी मुझे बताना है। जी स्ट्रीम को शेयर करते जाएं। ठीक है, और हम एनालाइज करते हैं गोल्ड को। वैसे मैंने एनालाइज काफ़ी मैंने किया हुआ है और आपको बता दूं। ठीक है, सबसे तरीकाकार जो पहला हमारा होता है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हमने मार्क करना होता है। ठीक है, और हमारे पास जो मार्क हुआ ठहरा है वो बहुत पुराना है। पीडीएच हमारे पास मार्क ही नहीं हुआ ठहरा। कोई मसला नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। जी तो तमाम दोस्तों आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिए। ठीक है, अब ये है कि प्रीवियस डे हाई ऑलरेडी ये ले चुका है। ठीक है, और दोबारा क्लोजिंग इसने अंदर ही आके ये हमारे पास यहाँ पे बाय स्टॉप लिक्विडिटी जिसे लोग बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं वो ली प्राइस ने। वो लेने के बाद अभी एक रेंज बना रही है और ये जो मूव आपको नज़र आ रहा है तो ये कुछ इस तरह से था। मैं फीबो लगाऊं यहाँ तक, और जो ये आपको नेक्स्ट 3 कैंडल का मूव है वन का नज़र आ रहा है ये आपको 78.6 के एरिया से मिला है मूव, और एग्जैक्ट एंट्री मिली और अच्छा मार्केट मूव देगा तकरीबन। मैं आपको बताता हूँ ये मूव मिला 40 से लेके नीचे 25 तक, यानी कि 150 पिप्स प्राइस ने मूव दिया है। ठीक है, एट वन का टाइम फ्रेम है तो 150 पिप्स बहुत मायने रखते हैं। और हुआ कुछ यूं कि भाई मार्केट अगेन ऊपर जा रही है। मैं M30 का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ और इसमें बताता हूँ आपको। अब ये कैंडल ऊपर मूव कर रही है, सारी क्या है कि अब न्यूज़ की तैयारी कर रही है FOMC की। दुआ करें कि न्यूज़ के दौरान गोल्ड ड्रॉप हो। हम ड्रॉप में सेल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे,
ठीक है, हमने जस्ट लेनी है लिमिट्स, ठीक है ना। आप एक ऑर्डर ब्लॉक पे देखें, जब पीडीएल ब्रेक होता है तो हमने नीचे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है, उस ऑर्डर ब्लॉक से हम बाय लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक है आपका 2982 से लेके 2987 का जोन है M30 के मुताबिक। ये आपने एक लिमिट इधर लगानी है बाय की, और एसएल आप 2979 रखना है या फिर 2975 इस तरह से कुछ रखना है, क्योंकि FOMC कुछ भी कर सकती है, थोड़ी सी स्पाइक ज़्यादा भी दे सकती है। एक बाय की लिमिट इधर और नेक्स्ट जो बाय की लिमिट, क्योंकि अब देखें ये रेंज है, ये ओल्ड लो है, मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। और इसको मैं रिमूव करता हूँ फ़िलहाल, और ओल्ड लो को मैं आगे लेके चलता हूँ। देखिए ओल्ड लो अगर ब्रेक हुआ तो ये पीछे अच्छी खासी मूव ठहरी है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो इस मूव को कैच कर सकती है फिर, ठीक है, अगर ओल्ड लो ब्रेक हुआ तो। जी लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, ठीक है, ताकि कुछ और मेंबर आए। स्ट्रीम पे बंदे होंगे तो फिर मज़ा आता है काम करने का। जी शुएब भाई, सेल आ भी सकता है, तो हम ज़ाहिर है हम टॉप पे बाय तो नहीं करेंगे। बाय किस कहाँ पे करते हैं? हर जो मेंटोर है शुरू शुरू आपको सिखाते वक्त कहता है कि बाय फ्रॉम डिप, सेल फ्रॉम टॉप, ठीक है। अब टॉप पे भी कुछ एविडेंस दे के सेल करना होता है। तो सेल में 150 पिप्स प्राइस मूव कर चुकी है, और वो किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। देखें प्राइस, यहाँ पे प्राइस ने दिया ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट मार के स्ट्रक्चर हुआ उधर। उसके बाद जी हमारे पास लो क्या हुआ, ये कंफर्म लो हो गया, और जो कंफर्म लो ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। MSS यहाँ पे हमारे पास आया, और MSS यहाँ पे आया। उसके बाद होता कुछ यूँ है, MSS के बाद प्राइस जाती है नीचे वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो मैं अपना फीवर टूल लगाता हूँ, और यहाँ पे मेरा एक OT लेवल होता है 79 का। इस एरिया पे प्राइस आती है तो फिर मैं सेल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OT। अब मैं फीवर अगर रिमूव करूँ तो आप ज़रा चेक करो, OT पे ही टैप करके प्राइस डाउन आई, और डाउन कितना आई है, तकरीबन 42 से नीचे आई तकरीबन 25 तक, यानी कि आपको ये दे गई 170 पिप्स दे गई प्राइस, ठीक है, ड्रॉप में, सेल में। अब प्रीवियस डे हाई है, ये इधर ही टैप कर रहा है। अभी आपने ना सेल लेना है ना बाय लेना है, ठीक है। और अकाउंट अब बड़ा है, तो अगर आपने FOMC का मज़ा चखना भी है तो 0.01 से आपने लॉट साइज बढ़ानी नहीं है सेल में, अगर आपने देखना है, ठीक है। और SL आपका इससे ऊपर होना चाहिए, यानी कि 3046 या 3050 आपका SL होना चाहिए। और एंट्री आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मार्केट बहुत नीचे है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी ले सकती है, ये आपने याद रखना है। ये जो मैंने एरिया मार्क किया है जो कि 3045 का एरिया है, और प्राइस क्या करेगी, इसको इसकी लिक्विडिटी, क्योंकि एक मरतबा OT से गिर चुका है, लिक्विडिटी हंट कर सकती है, ये याद रखिएगा। कुछ इस तरह से
हमें देखने को मिले स्ट्रक्चर तो फिर हम सोच सकते हैं हाँ भाई सेल हम कर सकते हैं। ये किस तरह से लिक्विडिटी लेंगे, क्लोजिंग अंदर दे और नेक्स्ट कैंडल बेरिश क्लोज दे तो फिर हम सेल लेंगे, ठीक है। और मे बी ये न्यूज़ तक, अभी न्यूज़ 11 को तकरीबन 1.5 घंटा दे रहा है, 1.5 घंटे में ये ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। न्यूज़ से आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले गोल्ड अच्छा खासा मूव कर देता है और फिर न्यूज़ में हमें पैनिक करता है कि भाई बंदा कोई ट्रेड ना ले सके किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा स्ट्रक्चर। तो फिर क्लोजिंग अंदर से स्वीप करने के बाद एक बेरिश कैंडल बनाए तो फिर परफेक्ट सेल होगा न्यूज़ पे, क्योंकि FOMC स्पाइक ऊपर दे के नीचे भी आ सकती है वापस। अगर नीचे आती है तो अच्छे एरियाज ये हैं, एक आर्डर ब्लॉक है जो कि मैंने आपको बताया 82 से 87 का एरिया है, ठीक है। और सेकंड ओल्ड लो है, अगर ओल्ड लो ब्रेक हुआ, इसको रिस्पेक्ट ना मिली तो इसको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी ओल्ड लो को, जो कि तकरीबन 78 का लेवल है, और फिर प्राइस जो है वो रिटर्न टिकट ले सकती है, ठीक है। और इसके बाद देखें नेक्स्ट, ये पीछे सारा इम्बेलिस्टर है, इम्बेलिस को फिल भी कर सकती है प्राइस, ठीक है। अगर इतनी इसमें इम्पैक्ट हुआ इस FOMC पे, अगर मज़ा आया ट्रेड करने का तो इस इम्बेलिस को फिल भी कर सकती है और प्राइस इस FVG से भी उठेगी, जो कि तकरीबन 45 से 49 का एरिया है। और इस एरिया तक अगर प्राइस आई तो अच्छा खासा गोल्ड फिर रिटर्न जाएगा, तकरीबन 200 से 300 पे आपको मिल सकते हैं अगर इधर आया तो, वरना इस ऑर्डर ब्लॉक से उठ जाएगा अगर ड्रॉप उसने दिया तो। PDL ब्रेक होता है तो फिर हमने नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना था या FVG जिससे हम एंट्री लें। अभी देखिए जो ये ऑर्डर ब्लॉक था इसको ऑलरेडी रिस्पेक्ट मिली हुई है, चेक करें। ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ऊपर गई। ऑर्डर ब्लॉक कहते किसको है, जिस ब्लॉक को, जिस एरिया को प्राइस रिस्पेक्ट दे और फिर आपकी फेवर में जाए, वहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं, उस ऑर्डर को पिक करती है प्राइस और निकल जाती है, उसी एरिया को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, फेल नहीं होता, वो ऑर्डर ब्लॉक होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर पड़े ही नहीं होते। ऑर्डर ब्लॉक उसको कहते हैं जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं, प्राइस वो ऑर्डर पिक करके वापस जाती है, ठीक है। जैसे ये देखें उसने ड्रॉप दिया प्राइस ने, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर थे यहाँ पे ब्रेकआउट पे उसने एंट्री दी होगी, ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एक्शन वालों ने इस एरिया पे एंट्री दी होगी, लेकिन ये ड्रॉप दिया उसने, ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके फिर प्राइस निकल गई। SMC और प्राइस एक्शन में यही फ़र्क है, आपको ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत फ़र्क नज़र आता है। और ऑर्डर ब्लॉक पे आपका जो SL है वो छोटा बनता है। आप देखें अगर आपकी एंट्री इधर से होती है और आपका SL क्या बनता, ये आपका SL बनता छोटा सा, और TP आपका ये बनता इस तरह से। जबकि प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, प्राइस एक्शन वाले इस तरह से, अगर इधर आपकी एंट्री है, इस जगह पे अगर आपकी एंट्री है तो SL वो रखते हैं पीछे सपोर्ट पे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। और TP तकरीबन इतना, यानी कि 1:1 या फिर 1:2 के प्रीवियस लो से, प्रीवियस हाई से नेक्स्ट हाई बड़ा होना चाहिए, वो इस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन SL भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जोन मैंने मार्क कर दिए और सेल की डायरेक्शन भी मैंने बता दी इस तरह से कि गोल्ड इस तरह से कर सकता है। स्ट्रीम को शेयर करो, ठीक है, शेयर करोगे तो मज़ा आएगा एनालाइज करने में भी मार्केट को। ये इशू है भाई, आपको आवाज़ नहीं आ रही, मुझे ये कंफर्म करें। जी, स्ट्रीम को शेयर करते जाओ और एक एक पेयर बताते जाओ जिस पेयर को मैंने एनालाइज करना है आपके लिए, ठीक है। और FOMC पे जो ट्रेड करना चाह रहे हैं वो मुझे पेयर बता रहे हैं। BTC को देख रहे हैं, BTC देखें, BTC जा रहा है ऊपर की तरफ, और मैं इसको खोलता हूँ H4 का टाइम फ्रेम,
H4 में अगर मैं देखूँ सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू, तो ये कुछ इस तरह से करेगा। देखिए मार्केट ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ ब्रेकआउट के बाद, ठीक है ना, और शिफ्ट होने के बाद ज़ाहिर है इसे, ये हमारे पास क्या था, एक मिनट, जोन कहाँ है, ये है, ये कंप्लीट जोन था। आरटीओ से भी प्राइस नीचे आई, सेल स्टॉप लिक्विडिटी उसने ली, क्लोजिंग उसके अंदर दी, एक बुलिश कैंडल के ऊपर बाय गया और अभी भी बाय जा रहा है। ये चीज़ मैं कहता था। अब क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है एक सिंपल एक आइडिया के तौर पे प्राइस सेक्शन के थ्रू, अब अगर मैं यहाँ पे ये एक चैनल बनाऊँ थोड़ा इस तरह से, और आप ये खुद चेक करो, देखिए ये सिंपल चैनल है, ये मैं लगा रहा हूँ। अब होगा कुछ यूँ, अगर बीटीसी को आपने बाय देखना है, ठीक है, तो वेट करो, एक ये जो बुलिश चैनल बना हुआ है H4 का, मैं इसको H1 में लेके आता हूँ टाइम फ्रेम। ये देखें, ये आपके पास क्या चीज़ बनी हुई है, ये आपके पास है बुलिश चैनल, ठीक है। तो आपने बाय अगर बीटीसी को देखना है, थोड़ा सा डिप मारने दें, जैसे ही डिप मारेगा वो इधर मार सकता है, इधर मार सकता है, ठीक है, और फिर आपने लेना है बाय जब देखेंगे तो टारगेट आपका आगे 87,670 होगा, ठीक है, बाय की ट्रेड में। और ये एरिया अगर जोन ब्रेक कर रहा है, इसके बाद कुछ बीटीसी इस तरह से करेगा, ये रिट्रेसमेंट पकड़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से बीटीसी का मूव हमारे पास हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश आइडिया पे क्लिक करूँगा, और पब्लिश आइडिया में ये है कि ट्रेडिंग व्यू पे आपके जितने भी फॉलोअर हैं, बीटीसी ट्रेड फॉर FOMC, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेम इधर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ #FOMC, #WUMFX Academy, #Forex, #News Trading, ये टैग होते हैं, ठीक है। आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट कहता हूँ WUM Forex Academy, ओके करता हूँ। और कुछ ऑप्शन होंगे, मैं कह रहा हूँ कि बीटीसी लॉन्ग जाएगा, इसमें मैंने ये किए, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस किए, फंडामेंटल्स किए, ठीक हो गया। और शो मोर पे अगर क्लिक करें, टैग बीटीसी FOMC BTC USDT, ठीक है, और टुडे FOMC, कुछ इस तरह से आपने अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस तरह से करना है। और इसके बाद पब्लिश आइडिया पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा आइडिया जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पब्लिश हो जाएगा, लोग भी इसको देख सकेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा। देखें, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ लोड न्यू बार्स, तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने टैग दिए, कमेंट भी लोग कर सकते हैं, ये मेरे एनालिसिस थे FOMC के, ठीक है। और इसका लिंक कॉपी करके मैं ग्रुप में भी डाल सकता हूँ। ये हमारा मेन चार्ट है जो कि हमारा जहाँ पे बीटीसी के एनालिसिस हुए पड़े हैं। अब मैं इसको ग्रुप में डालता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट DXY को कि DXY क्या करेगा। डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं DXY।
तो ये पीछे अच्छा खासा इम्बैलेंस आया है। यहाँ पे मैं आकर अब देखें DXY भी यहाँ पे इस एरिया से बाय है, ठीक है। बाय कब करेंगे, डेली का टाइम फ्रेम है, और क्लोजिंग देखें अगर इसके ऊपर देता है, इसकी विड्थ मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, और ये हो गया। अब मैं ये इंडिकेटर हाइड करता हूँ। H4 का टाइम फ्रेम ओपन करूँगा और DXY को देखेंगे कि मज़ीद क्या करेगा। देखें जो ये लाइन है इसको मैं ऊपर करता हूँ इधर, बल्कि इस एरिया तक पहुँचते ही DXY क्या करेगा, DXY आपको ड्रॉप दे देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर ये एरिया ऊपर ब्रेक हो गया तो फिर DXY कहाँ पे जाएगा, ये जोन है, ठीक है। DXY अगर ये जोन ब्रेक करता है रिट्रेसमेंट के बाद फिर ऊपर चला जाएगा तो ये जोन होगा। DXY अगर ऊपर गया तो फिर गोल्ड ड्रॉप देगा। अगर DXY इस एरिया पे पहुंच गया और न्यूज़ करीब हुई तो DXY ड्रॉप देके और गोल्ड पंप करेगा, ये चीज़ याद रख लेनी है। और SMT देखना है, SMT किस तरह से देखोगे आप लोग, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ गोल्ड का चार्ट, H1 का टाइम फ्रेम, इसको रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद ये देखें PDH से ही नीचे आ रहा है, फिर को रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने ऐड करना है सिल्वर को, सिल्वर को ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग में जाके इसको इनपुट में जाऊँगा, इसके जा गया, विजिबिलिटी हो गया, ये स्टाइल क्या होगी, कैंडल, ठीक है, ओके करूँगा। नीचे चार्ट सिल्वर का है, ऊपर गोल्ड का है। डाइवर्जेंस आपने चेक करनी है, ठीक है। डाइवर्जेंस चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कहाँ पे SMT यानी कि मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। अब देखें ये मूव आपको किस तरह से नज़र आया, ये जो आप मूव देख रहे हो ये बाय का मूव गया है, ये कैसे गया, सिंपल आपको बताता हूँ। देखें अगर आप यहाँ से नोट करें तो ड्रॉप दे रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के बिल्कुल बराबर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बिल्कुल बराबर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के बिल्कुल बराबर ये पॉइंट है। अब ये दो पॉइंट ये तो ड्रॉप दे रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन अगर देखी जाए तो नेक्स्ट ये दो पॉइंट देखें ड्रॉप दे रहा है, इसी के बिल्कुल बराबर देखें ये है, या ये देख लें ये बिल्कुल लाइन पे है, ठीक है। और सेकंड एक और आपको डाइवर्जेंस दिखाऊँ, यही क्या है, यही डाइवर्जेंस ही SMT है, जब दो करस्पॉन्डिंग पेयर को हम मैच करते हैं, बाय जा रहा है और ये आपका नीचे सेल जा रहा है, हिडन डाइवर्जेंस हुई, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, उसने अपने हिडन डाइवर्जेंस को फॉलो किया और ऊपर चली गई। इन चीज़ों को हमने समझना है। अब ये ड्रॉप दे रहा है यहाँ से, आप लोग समझते होगे कि भाई जोन तो ऊपर ठहरा है, पहले क्यों ड्रॉप दे रहा है। जब आप सिल्वर पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास प्राइस एक्शन वाला जो आप लोग कहते हो कि ये आपके पास डबल टॉप है, जबकि डबल टॉप वैसे ऊपर आता है, लेकिन ये एक स्विंग दे चुका है, स्विंग इसकी यहाँ पे मुकम्मल हुई, रिट्रेसमेंट के लिए ये नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको सिल्वर और गोल्ड के एनालिसिस देखने को मिलेंगे। ड्रॉप दे, ये मैंने एरिया मार्क किया हुआ है जो कि तकरीबन
अभी तो यहाँ पे वैल्यू नहीं नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का पेयर लगा हुआ है। M5 का टाइम फ्रेम, M5 की लास्ट जो ये स्विंग है, ये लास्ट लो है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मार्क करें, प्राइस जो है इसी एरिया से बाहर निकलेगी, निकल भी सकती है या फिर हमें थोड़ा बहुत ट्रैप भी कर सकती है। जी, बाकी स्ट्रीम को शेयर करो, ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना मज़ा आएगा, ट्रैफिक आएगी तो फिर मज़ीद हम इसी FOMC की लाइव स्ट्रीम को आगे लेके जाएंगे और न्यूज़ के दौरान कोशिश करेंगे कि परफेक्ट ट्रेड हम फाइंड करें। आप लोग शेयर करो ताकि मैं ये कुछ इस स्ट्रीम की सेटिंग कर लूँ, थोड़ी बहुत SEO कर लूँ और उसके बाद फिर मज़ीद हम बोलना स्टार्ट करते हैं। गोल्ड के एनालिसिस भी हुए पड़े हैं। जी, तो स्ट्रीम पे एक बंदा बैठा है, स्ट्रीम शेयर नहीं कर रहे आप लोग।
जी स्ट्रीम को शेयर करो, ठीक है। तो कमेंट में एनालिसिस बताते जाओ किस किस पेयर के आपको एनालिसिस चाहिए। मज़ीद फिर उस पेयर के हम एनालिसिस शेयर करेंगे इसी स्ट्रीम में, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आया करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको डेली स्ट्रीम को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैफिक होगी तो फिर मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता तो फिर बंदा दिल छोड़ देता है, दिल छोटा कर लेता है, फिर ये लाइव पे आना ही छोड़ देता है। अगर आपने एसएमसी या आईसीटी मॉडल्स को सीखना है, ठीक है, 3 महीने का कोर्स होगा। मेंटोरशिप के लिए आपने आईबी में आना है। नीचे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आपको ट्रेडिंग व्यू का सिग्नल का चैनल भी नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो तीनों को जाओ फॉलो करो। व्हाट्सअप तो खैर नंबर है, सेव कर लो और मुझे टेक्स्ट कर देना। सेकंड, जो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इंस्टा और टेलीग्राम, इनको आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। और अपना अपना पेयर बताते जाओ कि किस किस पेयर के एनालिसिस आपको शेयर करूँ इसी ग्रुप में, यानी कि इसी स्ट्रीम में। और देखते हैं एफओएमसी मज़ीद क्या करती है। आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी लिक्विडिटी पड़ी है, ये भी लिक्विडिटी पड़ी है। अब मैं क्या करूँगा, इन दो लिक्विडिटी जोन से प्राइस को स्वीप होता देखूँगा। अगर स्वीप किया प्राइस में, स्वीप करने के बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी तो फिर मैं बाय ले लूँगा, बजाय मैं इस जोन का वेट करने के लिए, ठीक है। वेट नहीं करूँगा मैं। और अगर इन दो एरिया से प्राइस कहीं भी स्वीप कर रही है और पहली बुलिश कैंडल बना रही है, तो मैं स्वीप वाली जगह पे ऐसा रखूँगा कैंडल का लो, जो कि ये वाला पॉइंट है, और जहाँ पे कैंडल नेक्स्ट बुलिश बनेगी तो वहाँ से मैं एंट्री लूँगा। जीबीपी यूएसडी का H4 का टाइम फ्रेम है, और फिर बाय देखूँगा, ठीक है। और अगर ये वैसे होता कुछ यूँ है जैसे इसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ सारा, इस तरह से ये अपनी लिक्विडिटी छोड़ती है, एंड में ये सारी लिक्विडिटी ले लेती है, ये जितनी भी लिक्विडिटी छोड़ के जाती है। तो वैसे 1 2, तो यही बनता है कि भाई अगर यहाँ पे प्राइस अपनी लिक्विडिटी लेती है, चले मैं इधर कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसका भी रिमूव करता हूँ। अगर प्राइस ये लिक्विडिटी ले लेती है तो फिर क्या होगा कि सेल गिर सकता है। कहाँ से सेल गिर सकता है, ये देखें, ये रैली बेस रैली डिमांड जोन है, और इसी के साथ मैंने ये एक जोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये स्पाइक देगा कुछ इस तरह से, ये देखें, इधर से स्पाइक आएगा नीचे, फिर यहीं से बाय की तरफ ट्रेड उठ सकती है। या फिर इन दो लिक्विडिटी जोन से प्राइस उठे, कम से कम ये जोन, ठीक है, और इस जोन को प्राइस रिस्पेक्ट दे, और फिर बाय प्राइस जो है वो बाय की तरफ निकल सकती है, कुछ इस तरह से। स्टॉप लॉस आपने छोटा रखना है, ठीक है। एंट्री आपने, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, मिड पॉइंट से लेनी है, ये बिल्कुल सेंटर से। और एसएल आपने बिल्कुल इस एरिया के एंड होने के थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। टीपी आपने वही प्रीवियस हाई रखना है। इसी तरह से मैं अगर इस जोन की बात करूँ तो ये भी इसी तरह से ही होगा, और इसको बिल्कुल बराबर रखता है। और एरो भी सेट करते हैं ताकि पता लगे कि भाई किसी ने एनालिसिस किए हैं। जी, तो बाकी अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो मेरे सिग्नल ग्रुप, या मेरे साथ यूट्यूब पे या गूगल मीट पे बैठ के लाइव ट्रेड करना चाहते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री, तो इस वीडियो की, इस लाइव स्ट्रीमिंग की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे कुछ ब्रोकर के, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, जिसमें पहला ब्रोकर है एक्सनेस, दूसरे नंबर पर जो ब्रोकर आता है वो है डू प्राइम।
इन दो ब्रोकर पे आप आके डू प्राइम पे आप STP अकाउंट ओपन करो, $1000 डिपॉजिट करो और पर स्टैंड लॉट $5 मैं आपको गिफ्ट करूँगा। ठीक है, और फर्ज करें आपने डेली ट्रेड की 2 स्टैंड लॉट, या आपको मैं पर स्टैंड लॉट $10 भी दे सकता हूँ। 2 स्टैंड लॉट आपने अगर ट्रेड की तो आपको सीधा $20 तो मेरी तरफ से कमीशन आएगा। ठीक है, STP अकाउंट होना चाहिए डू प्राइम का और 1000 डिपॉजिट होना चाहिए। तो पर स्टैंड लॉट 5 से लेके $10 तक मैं आपको पे करूँगा। और ये ऑफ़र एंड तक है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। आप सुकून से सोच समझ के आएँ और मेरे इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने $1000 डिपॉजिट किया, ज़ाहिर है ट्रेड अंधाधुंध तो नहीं करनी, सोच समझ के करनी है। $1000 पे स्टैंड लॉट लगा के ट्रेड की, या 50 सेंट की या 20 सेंट की, जैसे ही स्टैंड लॉट होगी मुकम्मल तो पर स्टैंड लॉट आपको मैं $5 दूंगा। अगर मेरे साथ पुराना बंदा है तो उसको पर स्टैंड लॉट में $10 ऑफ़र करूँगा। इसी तरह से वो अपना नेटवर्क चलाए, नेटवर्क बनाए, लिंक मेरा स्प्रेड करे, मेरे लिंक से ज्वाइन कराता जाए और अपने पास भी रिकॉर्ड रखता जाए। और उस बंदे के जितने भी क्लाइंट्स हैं, पर क्लाइंट जितना भी स्टैंडर्ड लॉट लगाएगा उस भाई को मैं पर स्टैंडर्ड लॉट उसे उसके क्लाइंट्स की तरफ से दूंगा। ठीक है, अब वो पीछे क्लाइंट को पे करे या ना करे वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। ये मेरी ऑफ़र है, और जो मेरे साथ मिल के चलना चाह रहा है तो वो फिर मुझे इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद टेक्स्ट करे, ताकि मैं उस भाई को भी प्रॉपर गाइड करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बंदे हैं जो कि हम मिल के ये काम कर रहे हैं। एक एकेडमी का नाम होता है तो सब बंदों का काम चल जाता है। अगर सब बंदे अपना अपना कर रहे हैं तो फिर सारे खाली बैठे रहते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। जी, स्ट्रीम शेयर करते जाओ। ठीक है, ये मैंने आपको एनालिसिस दिया GBP USD के, और उसके बाद मैं आपको एनालिसिस देता हूँ गोल्ड के, जो कि हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। सिंपल, अब देखो एक स्ट्रैटेजी जो कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कहलाती है, तो ये एरिया आप देख रहे होगे। अब ये एरिया ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेगी, प्राइस डाउन ज़रूर जाएगी। इससे ऊपर जो थी एक रेंज, ये देखें, ये अब ये ड्रॉप ज़रूर देगा, लेकिन ये कंप्लीट इम्बैलेंस वाली कैंडल है। कहाँ तक ये डाउन जाएगा, वो ये डाउन जाएगा, इस इम्बैलेंस को फिल करेगा गोल्ड, और ये इस एरिया तक डाउन जाएगा, जो कि तकरीबन ये पेयर कौन सा, अच्छा सिल्वर खोला हुआ है मैंने, तो सिल्वर जो है ये इस एरिया तक जाएगा नीचे। ठीक है, और इसके बाद गोल्ड का बताता हूँ आपको। सेम गोल्ड H4 का टाइम फ्रेम है, सिल्वर डाउन जा रहा है, गोल्ड अभी ऊपर ही उधर ही ठहरा है। H4 का टाइम फ्रेम, इसको मैं H1 में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, अगर सिल्वर ड्रॉप दे रहा है तो गोल्ड को भी ड्रॉप देना चाहिए। बाद का गोल्ड का स्ट्रक्चर हमें समझ नहीं आता, लेकिन सिल्वर का समझ आ जाता है। सिमिलर पेयर सिल्वर और गोल्ड हैं, और अपोजिट पेयर GBP JPY गोल्ड, DXY गोल्ड, सिल्वर गोल्ड। मतलब सिल्वर गोल्ड में जस्ट हमने SMT देखना होता है, बाकी वो तकरीबन सेम ही है। ठीक है, अपोजिट और सिमिलर मैंने आपको पेयर बता दिए। GBP JPY का कंपैरिजन गोल्ड के साथ करो, गोल्ड का कंपैरिजन DXY के साथ करो। ये आपस में एक दूसरे के रिवर्सल हैं। ठीक है, और मैं तो प्रॉपर सेल लूँगा। ये एरिया स्विप होगा तो फिर, अगर स्विप नहीं होता तो फिर मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा, ड्रॉप होने दूंगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लूँगा या फिर इस जून से एंट्री लूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है अगर बाई की एंट्री हमें मिलती है तो लॉन्ग टर्म मिलेगी, बेहतरीन मिलेगी। और नेक्स्ट हो सकता है कि गोल्ड फिर 3100 भी टच कर जाए, अगर ये बाई को रिस्पेक्ट देता है तो। स्ट्रीम शेयर करते जाओ यार, स्ट्रीम शेयर करो। ठीक है, और इंशाल्लाह SMC भी सिखाएंगे। SMC तो कोर्स वो शुरू करेंगे जल्दी।
जी भाई लोग, बाकी अगर किसी को एक अलग पेयर के एनालिसिस चाहिए तो वो मुझे बताए, ताकि वो मैं एनालाइज करूं और आप तक वो मैं इस स्ट्रीम में शेयर करूं। जीबीबी यूएसडी यानी कि पाउंड के कर लिए, गोल्ड के कर लिए, डीएक्सवाई का मैंने आपको बता दिया। जीबीबी जेपीवाई चेक करते हैं कि वो क्या करेगा। देखें, मैंने कहा जीबीबी जेपीवाई को कि इस एरिया पे ड्रॉप दे फिर बाय करेंगे, लेकिन वो ड्रॉप उसने ज़रूर दिया, लेकिन इस एरिया पे नहीं, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से होके चला गया। और अगर मैं ये सिंपल इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो इस इंडिकेटर से मैंने बाय या सेल के बटन नहीं देखने, जो कि लोग मे फेयर स्कैल्पर से ये बाय या सेल वाले बटन देख के बाय सेल करते रहते हैं। मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे सिर्फ ये जून देखने होते हैं। कौन कौन से जून मैं आपको बता देता हूँ। एक ये जून है, ओवर सोल्ड है, ठीक है, और एक ये जून है जो कि ओवर बॉट है। मुझे ये दो जून देखने होते हैं, और उसके बाद फिर मैं इन्हीं जून के बिल्कुल करीब जो मेरा एरिया होता है उसको मार्क करता हूँ, जैसा कि मेरे पास ये हो गया। तो जो मेफेयर स्कैल्पर यूज़ करता है वो इस तरह से बस जून को देखे, ओवर बॉट या ओवर सोल्ड जब हो तब बाय या सेल ले। इसके बाद खाली बटन को बाय या सेल को देख के आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। और सिंपल आपको बताता हूँ, ये कुछ डिज़ाइन है। अब ये है कि जी बी बी जे पी वाई H1 का टाइम फ्रेम है, H4 को ओपन करता हूँ मैं और देखता हूँ। देखें, मुझे नीचे तो नहीं नज़र आ रहा कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये एक ही स्पाइक ऊपर मारेगा और ओवर सोल्ड वाले एरिया से गिरेगा। जे पी वाई क्यों ऊपर की तरफ क्यों इशारा दे रहा हूँ, ये एरिया है और इस एरिया से सेल ऑलरेडी उसने दिया हुआ है H4 के टाइम फ्रेम से। और ये देखें, इसी एरिया से मैंने सेल भी दी थी, प्राइस आई इस एरिया तक थोड़ा सा यानी कि मूव कर गई। तो नेक्स्ट जो जी बी पी जे पी वाई है, तो मेरे मुताबिक तो इसे बाय निकलना चाहिए। और याद रखना, आपने H4 का टाइम फ्रेम खोल के ये एरिया मार्क कर लेना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है रेटस के बाद फिर सीधा बाय निकलेगा और लॉन्ग टर्म बाय निकलेगा तकरीबन, क्योंकि इसके बाद आपको ये एरिया मिलता है, ये वैल्यू जो कि आप देख रहे हो 195.900 के ऊपर है। उसके बाद आपको ये एरिया मिलेगा 195 नहीं 198.200 के ऊपर ये एरिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो आपको बाइक की तरफ नज़र आएंगे। और स्ट्रक्चर जो है वो खैर इधर कंप्लीट होगा लास्ट हाई पे। इसकी जगह पे बेहतर है आप ये देखो, फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरह से करना है, इसी चीज़ को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, 50-50 100-100 पे आप लो, तो इसको हटा के इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 टीपी मैंने आपको बता दिए। जी बी पी जे पी वाई के बाय में ड्रॉप देगा तो हमने इस एरिया से बाय लेना है, ठीक है। और इसको मैं फ़िलहाल रिमूव करता हूँ, और इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। देखें, मैं बाय लूँगा प्रॉपर जो बाय लॉन्ग टर्म बनता है। अगर ये पहले इस एफ ओ एम सी पे ड्रॉप देता है तो आपकी लिमिट एक इस एरिया पे हो और एक इस एरिया पे हो, ठीक है। और इसको मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। देखें, दो एरिया पे आपकी लिमिट्स होनी चाहिए, ये जोन और ये जोन, ठीक है। इसको मैं लाइन को बेशक रिमूव कर दूँ। एक तो एंट्री इधर होनी चाहिए, एक एंट्री आपकी इधर होनी चाहिए, लेकिन दोनों पे स्मॉल स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि यार इधर से एंट्री और सेकंड इधर से एंट्री, ये नहीं होना चाहिए। आपने जस्ट इस तरह से स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा सा बेशक बड़ा कर लें, और टीपी रखना है प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई नहीं भी रखना तो आप बेशक
लास्ट तक ले जाओ, लेकिन कोशिश करो 1:2 लो और साइड पे हो जाओ, ठीक है। ज़्यादा आपको होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वो इस एरिया से मैं एंट्री पकड़ूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा। उसके बाद H4 का टाइम फ्रेम है, फिर भी आप स्टॉप लॉस चेक कर लो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से करेंगे, लेकिन मैं बंदा हूँ 1:2 वाला, तो मैं छोटे टीपी ही रखूँगा, ठीक है। एक रेशो के साथ 2 का टीपी। ये है हमारे पास GBP JPY। जी, एक दोस्त है वो कहता है कि नीचे जो कमेंट आया हुआ है, कोई अंग्रेज़ है, एंजिलो एल्वेस सिल्वा का कमेंट है, हु हैज़ ऑलरेडी बॉट XA1Z token in the pre-sale, I want to buy but I don't know where help। सो इसको हम रिप्लाई देते हैं कि ब्रदर दिस इज़ नॉट अ चैनल दैट, इसको लिखते हैं सिंपल ब्रो। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया कमेंट में। स्ट्रीम को शेयर करो जितना हो सके, ठीक है। शेयर करोगे कुछ ट्रैफिक आएगी तो फिर मज़ीद आपको एनालिसिस करके दूंगा, और FOMC तक 11 बजे तक आपके साथ बैठा रहूँगा, बल्कि 12 बजे तक। अच्छा, मेरे पीछे साउंड आ रहा होगा आपको इस्लामाबाद में, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए उसका शोर आपको सुनाई दे रहा होगा।
जी शुएब भाई, बारिश कैसे एंजॉय कर सकते हैं? टाइम देखें 10:15 का हो रहा है। अगर बारिश एंजॉय करें तो फिर काम कौन करेगा? या तो फिर ट्रेड बंद कर दे, एफओएमसी को कहें कि यार कल आ जाना, अभी हमने बारिश एंजॉय करनी है। जी, स्ट्रीम को लाइक करते जाओ, जो जो भाई आ रहा है हाजिरी लगाते जाओ अपनी, ठीक है। और एफओएमसी के आते ही हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। और जितना हो सके इसको शेयर करो, जितने आपके पास फॉरेक्स वाले ग्रुप हैं उनमें शेयर करो स्ट्रीम को, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे साथ बंदे जुड़ते जाएंगे तो हौसला अफजाई होगी, तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको हम लाइव पे ट्रेडिंग कराएं और सिग्नल दें इस तरह से। एक और मैं विंडो ऐड करता हूँ जिसमें हमें एफओएमसी की न्यूज़ यानी कि वो रीड कर सकें, और वो जो कहेगा स्टेटमेंट बोलेगा हम उसके मुताबिक ट्रेड भी कर सकें। एक और विंडो ओपन करता हूँ, इधर एफओएमसी स्पीच लिखते हैं। आपको खैर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, तो जी इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा छोटा। ये आपके पास एफओएमसी स्पीच होगी। अगर मैं इसका साउंड थोड़ा ऑन करूँ, because of my life in my school, that when I got my periods the first time,
just because I thought कि this is ये तो खैर ये शो कर रहे हैं कि अभी ट्रांसजेंडर की स्टोरी बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई एफओएमसी के हवाले से क्या स्पीच देते हैं और गोल्ड की क्या मूवमेंट आएगी। ठीक है, गोल्ड का पेयर साथ खोल लेते हैं। ये आ गया भाई हमारे पास गोल्ड। टाइम फ्रेम में इधर H1 का ओपन करता हूँ। होप्स हो कि गोल्ड ड्रॉप देगा, इसी एफओएमसी पे स्पाइक देगा और ये जो जोन मैंने मार्क किए हैं इन जोन के ऊपर कहीं ना कहीं से बाय निकलेगा। इतना भी ड्रॉप नहीं देता, यकीन याद रखो कि एक ये जोन है, ये भी अच्छा खासा जोन है। या फिर आप ये कंप्लीट इस जोन को भी अगर आपने मार्क नहीं करना तो ये जो ओल्ड है ये कंप्लीट इसको मार्क करो। ठीक है, और ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये इसके अंदर आ जाएगा।
economy to look down the road. What is your expectation in terms to growth estimates and inflation? Well, already the OECD has downgraded growth for the United States. Certainly these tariffs, and particularly the chaotic way that they're being put in place. One day they're on, the next day they're off, and then they're on again. It's very difficult for businesses to plan. To look down the road. What is your expectation in terms of manufacturers? to growth estimates and inflation? New York State that indicated a sharp decline in business expectations. The OECD has downgraded growth for the United States. The chips to land and to see where this administration will go. I think on the other hand, from the consumer side, you're seeing consumers getting increasingly anxious. Their expectations are souring, they're expecting more inflation. And again, that makes the Fed's job incredibly difficult, because if they continue to see expectations of higher inflation along or people sitting on the sidelines as we wait to see what the administration will do, that's not a great situation for the economy. Heather, you mentioned the dual mandate. I wonder to what extent you expect a change in language to reflect expectations for a rising unemployment rate. Tariffs one thing, DOGE is another. And at some point we're going to see the cumulative effect of these federal worker layoffs. What will that say today? Certainly, and DOGE is an issue for workers being unemployed, having lost their jobs. That is certainly an important piece of the puzzle, but then it's also important for all of the things that those workers used to do that are now not being done, that may be very important for economic growth. Think about what we've seen, of course, with the workers who had been dismissed, who were in charge of the avian flu, which, if that flu continues to move across our economy unchecked, that will continue to have an effect on egg prices, among other things across the economy. So the impact, though, of DOGE is difficult, I think, for the Fed to get a handle on, to measure, although they have, of course, an incredible team of economists to do all of that work. But the uncertainty, and of course with all the court cases coming down the pipeline, will those workers be reinstated? What will we see moving forward? Again, this all makes their job that much more difficult, and I think that the chair will remain, as he has already said, that the fundamentals of where we are, and of course the economy that the president inherited was quite strong, and we're not seeing the kinds of downturn in the data yet, but I'm sure he will express some caution about what's to come. Well, and when we consider that caution, it was described by Mohammed Al-Arian, who of course is a Bloomberg opinion columnist, earlier today with some of our colleagues, as being a question of if he's framing the potential of future cuts down the road as good cuts because progress is being made on inflation, versus bad cuts, which is easing policy because things are going south in the economy. How difficult is that line to walk? Well, what we saw in the first Trump term, when he raised tariffs and that raised prices, the Fed had some room to maneuver because we did not have the legacy of the inflation that we have now coming out of the pandemic. So now they are still working to get the inflation rate back down to their target rate, and at the same time, the tariffs are likely to raise prices for consumers. But they're also seeing people cutting back. Again, with DOGE, you're seeing these effects on employment. So, the word that I think people are going to start wondering about again is this word stagflation that we were all, of course, talking about at the end of the first Trump term. That was the word on everybody's lips. That's where we were concerned about the economy being. What will Jay Powell say about stagflation in our remaining moment, Heather? He's surely to be asked about it in the news conference. I'm guessing, and I don't know, I don't have a crystal ball, but I'm guessing he won't say the word. I'm guessing that he will continue to, indicate that, because they rely so heavily on the data, that the decision that they are making today is about the data that's already, in check, and they will remain cautious about where things go down the road.
All right, well, he definitely has a tough road ahead of him just about an hour from now. Heather Boucher, thank you so much. Former White House Council of Economic Advisors, member during the Biden administration, now at the Harvard Kennedy School. We appreciate it as we're counting down here to that decision less than half an hour from now. And the dot plot especially, as the market is very likely to be paying attention to whether or not cuts are going to materialize in a more material way this year than was expected even just a few months ago. Just to set the baseline here, watching the markets before we get into our special coverage, we're going to kick things to New York in just 1 minute with Tom Keene, Jonathan Ferro, and Lisa Abramowitz. The S&P 500, Kaylee, up 24 points. Not a huge rally, but holding positive today. The 10-year yielding 4.31%. Yeah, so we'll see how the market actually moves off of this. Keeping in mind, as you quote, where the 10-year yield is right now, that has come down substantially. That's right. In the last several weeks. An argument that this administration had made that you don't need the Fed to cut rates to bring rates down and mortgage rates along with it, that other policy could do that job, and maybe we've seen a little bit of that materialize. That is the message from Scott Bessent, that's for sure. We're bringing the 10-year lower, doing the work for the Fed. With Kaylee Lyons, I'm Joe Matthew. We'll meet you back here 5 p.m. Eastern Time on the late edition of Balance of Power. Special edition of Bloomberg Surveillance. The Fed Decides is on the way next, right here on Bloomberg TV and radio. Live from New York City for our audience worldwide, Bloomberg's The Fed Decides starts right now. This is a special edition of Bloomberg Surveillance with Jonathan Ferro, Lisa Abramowitz, and Tom Keene. Bloomberg Surveillance, The Fed Decides. Live on Bloomberg TV and radio, counting down to another Fed rate decision and Chairman Powell news conference. That decision 27 minutes away. Alongside Lisa Abramowitz and Tom Keene, I'm Jonathan Ferro. This Federal Reserve says they don't assume, speculate or guess. A little bit later, will they do just that? With their projections for how they see inflation and growth going forward, a question of how much they will reflect what we hear across Wall Street, which is firms collectively downgrading their expectations for growth and upgrading their expectations for inflation. Do we get a similar tone from the Federal Reserve? TK, this is a three-part act, a news conference at 2:30 Eastern Time. Before we get there, a non-decision in the minds of many. But those forecasts will be keenly watched. The forecasts will be really interesting, and I'd sum together inflation and real GDP. I like what Ernie Tedeschi and Martha Gimbel say at the Yale Budget Lab. Quote, things are getting weird. That's what this Fed meeting is about. Let's talk about that weirdness. Downside risk to growth, upside risk to inflation. Are they worried about one or the other, or both? And can they really have a Fed put on markets at a time where potentially you have this stagflationary light type of mix? We've been talking about, is the Fed put in action? Is the Trump put in action? Is the Fed put dead? And I ask that in the way that the market has traditionally known it, where they can rescue markets by signaling a more dovish stance. Does that have the same ramifications for a market that is pairing off with both growth risks as well as inflation risks? Let's check out this market. Equities right now in the S&P 500 just a touch firmer going into this decision at 2 p.m. Eastern Time. We're higher by 0.5%. And this bond market just can't get away from 430. Will that change in the next few hours? Your 10-year, 431.18. And I do think that the 10-year might be the most interesting one to watch, especially with discussions around quantitative tightening. Well, coming up shortly, Mr. Exceptionalism, or the U.S. not being so exceptional himself, J.P. Morgan's Bob Michael, Kathy Jones of Charles Schwab, and Bank of America's Aditya Bahave. They will be taking us up to that Fed rate decision at 2 p.m. Eastern. Then immediate reaction from Jim Bianco
of Bianco Research, along with Diane Swank of KPMG and Deutsche Bank's Matt Lazzetti. And finally, after we get that press conference from Chair Powell, we'll be hearing from former New York Fed President Bill Dudley, as well as Amanda Lynham of BlackRock, to understand what does dovish mean at a time where there are very different risks that are kind of contradicting each other. You mentioned Matt Lazzetti of Deutsche Bank cutting his outlook for growth in the last 24 hours and joining a very, very long list of economists who have done just that in the past week. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, the list goes on and on. If the Fed doesn't reflect that downgrade to the growth outlook that we also heard from the OECD, what does that mean in terms of just how much they are really reflecting the growth concerns? And does it actually suggest that they're somewhat more hawkish? Joining us now to discuss, I'm pleased to say, we can kick off this afternoon's program with Bob Michael of JP Morgan Asset Management. Bob, good afternoon to you, sir. It's good to see you. Good to be here. Let's just start with broad-based expectations for this one. What are you looking for? What an extraordinary Fed meeting. This is one that in 2031 you're going to want to play the tape of and listen to what they talked about. Think about it. They've guided the economy to the perfect mythical soft landing. While they should be tinkering, they find themselves in the middle of an escalating trade war. That's the situation they've got to deal with. I wouldn't want to be in that room with them. I think you're right. We're going to see the outcome in the dot plot. They're going to acknowledge that stagflation is a real possibility. Growth will be dialed down a bit. Inflation will be dialed up a bit. Let's watch where they put unemployment, because that will tell us how they think businesses are going to respond. We think that ticks up a couple tenths. We were talking about the Fed put and this question about how much the Fed will be inclined to rescue this market from growth concerns. What does that even look like at a time where it's unclear what they could say that could really prop up both growth and dampen rising inflation expectations? Well, they're going to do their best to be non-committal, because while they've seen some tariff policy out there, they haven't seen all of it. So they've got to keep their powder dry, so to speak. I think the one thing they're looking at is the level of unemployment. That's going to tell them how businesses are responding to the tariffs that are already in place and how they're thinking about the tariffs that could be coming down the road. I think if they start to see unemployment tick up over 4.5%, they're going to have little choice but to come in and start cutting rates. We don't do charts for the Fed decides, but I 100% agree with you. If I go back to 1991-92, if I go back to 2002, if we go back to what you enjoyed at JP Morgan in 2007, when the unemployment rate moves, it really moves. Is that where we are right now? I hope we're not there yet. I hope that businesses are being patient. They're going to wait to see what the actual policy looks like. Right now, it's tariffs on, tariffs off. It's difficult to plan, but if they start to worry and they start to pull back hiring, then I think that becomes a big problem. Just what is the offset? And you alluded to this. You might get a sign of how the Fed thinks about this in the forecast. How do you think the Fed will be navigating some of these changes to policy that we've seen over the past few weeks? I think that they're probably as confused as most of us, trying to figure out, are these lasting? I think they're looking at inflation expectations. Is that starting to tick up? That would really begin to worry them. For now, that's not actually happening. So I think they're trying to... Important distinction. Can I jump in? Sure. Market-based inflation expectations, the things that you can tell the world about in just a second, perhaps that's true. Survey-based expectations of the consumer, you, Mitch, etc., they have started to climb, and they've started to climb dramatically. We've seen this Federal Reserve respond to that in the past. Why won't they now? Well, what you're saying is people aren't stupid. They realize with tariffs coming along that businesses are going to pass some of that on to them. They're going to pay higher prices, and they're going to adjust their consumption because of that. I think the Fed is in a tough spot, because while they see that, I think genuinely that inflation could be transitory. It could be there for a year,
and then it could pass. They've already used transitory, they can't use that again. I think what they're more concerned about is how businesses respond to a drop in consumption. And if they start to pull back, then they've got to respond and cut rates. I guess what John's trying to get at, to some degree, is which data are they looking at, the soft data or the hard data? Are they looking at the sort of more rapidly moving sentiment indicators from not just UMISH, but others, as well as company guidance like Delta? Or are they looking at the figures that are released by the government at very periodic levels? Well, they tipped their hand a while ago that they're looking at both. When the data, the hard data itself was pretty stable, we looked at their forecasts and they had already started to adjust them, and he admitted that there are some members of the FOMC that were already thinking about how policy would interact with the economy. So I think it's a good Fed. I think they're looking at both. As I said, it's an impossible decision. The tension in the room is going to be very high. The 10-year yield, if we see some lessening of nominal GDP, does the 10-year yield lead nominal GDP down, or does it follow nominal GDP down? I think it will lead. I think that there will be a flight to quality in the Treasury market. Where's your level on that? Where's your signal point, your trigger point, where the level of the 10-year yield where that touches? I think we could go through 4% to 390 in a material slowdown. Where the market starts to begin worried about unemployment rising. That's great, John. You can get into that 8,000 square feet you're looking at. You think rates are going to come down that much, TK? I need rates at rock bottom. I need like 1% interest rates again. That's not going to get it done. Yeah, mortgage rates just rose again for the first time in about a month, but whatever. Bob, I do want to ask, though, about that 10-year yield, how dependent it's going to be on any kind of discussion of quantitative tightening and potentially pausing it or starting to slow the amount of treasuries that it's letting roll off its balance sheet. So let me just say, I hope the Fed doesn't change rates this year. I hope the 10-year stays where it is. I like yields where they are. That can bring in a lot of investment. But you've got the Treasury Secretary out there saying that they're targeting the 10-year. And certainly pausing quantitative tightening is one way to do that. And then I think what you're also going to see is reinvestment of mortgage roll-off into the Treasury market. So those kinds of tools will keep the 10-year at least stable where it is and likely push it down a little bit. And although I expect them to say pause, we don't believe that they're actually going to pause. We think they're done. Lisa, you're right to bring up QT. We spoke to a range of guests this morning on the program about that. Very, very split about what we might see in the next hour. Yeah, Gennady Goldberg coming out and saying he doesn't think that they're going to pause quantitative tightening until at least September. Meanwhile, Aditya Bahave is coming up with Bank of America, thinks that they're going to announce it in some capacity. Deutsche Bank's Matt Lazzetti, I think, is sympathetic with that view. So a real sense that that might be the big news from this press conference. That decision is 18 minutes away. Bob Michael at JP Morgan Asset Management will be sticking with us. Just a flavour of the bond market for you this afternoon. Bond yields are higher by 3 basis points at the moment on a 10-year, around 432. At the front end of the curve, up 4 or 5 basis points. Reapproach. जी तो तमाम दोस्तों बाकी न्यूज़ को 15 मिनट रहते हैं और आपके सामने ये मैंने चलाया हुआ है, ठीक है, स्क्रीन आपके सामने है, जो कि वहाँ पे स्पीच होगी और मूवमेंट इस चार्ट पे आपको सामने नज़र आएगी जो भी मूवमेंट होनी होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनके मुताबिक ये है कि वो बढ़ रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो USD वीक होगा, गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है मज़ीद, ठीक है। तो ये अपने प्रेडिक्शन बता रहे थे सारे, तो होगा वही जो कि वो पावेल स्पीच करेगा, ठीक है। यहाँ पे आके देखते हैं क्या करते हैं। बाय लेना है तो नीचे एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, आपने नीचे से बाय लेना है, पहले आपने कोई बाय नहीं लेना, ठीक है। तो इधर से डायरेक्ट बाय नहीं लेना है आपने, ना ही सेल लेना है। सेल लेंगे तो एक ही स्पाइक में आपको स्लिपेज भी देगा और SL भी ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। सेल ना लें, ड्रॉप ले तो नीचे से बाय ले लें, सेल ले तो अपनी रिस्क अपना देख लें, ठीक है, किस तरह से आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है। बाकी चलते हैं दोबारा, हम ये मज़ीद जो न्यूज़ चल रही है इसको सुनते हैं।
Johnson. I'm Kriti Gupta. And I'm Anna Edwards. Join us every weekday morning for the opening trade, live at 7 a.m. here in London. Only on Bloomberg. Context changes everything. स्ट्रीम को शेयर करते जाओ, ठीक है, और साथ साथ हम प्रिडिक्ट करते जाएंगे। बाकी आपके जो भी सवाल आते हैं आप कमेंट में लिख सकते हो, मैसेज टाइप करो, ठीक है, मैं वो पढ़ के आपको साथ साथ जवाब देता रहूँगा। Not just in the syncopations triggered by inflation, but in the preludes leading to global elections, in the dissonance that moves the Nikkei, and the rising course conducted by AI. There's music in the markets, and if you want to learn to listen for it, we'll show you how. The Fed, like so many others, are navigating a regime change. They've been pretty clear that they're on hold here. We're going to stay on hold for a little while. The Fed isn't in a position to cut just yet. They'll probably wait and see. I don't think that they want to surprise the market hawkishly here. They can no longer maintain that we don't speculate, we don't guess on policies. The hard data and tariff information are really, we think, going to overshadow anything we'll get from the Fed. They have got to take a view. People are looking for the Fed to sort of come to the rescue. That Fed put is something we won't see. The Trump and FOMC puts, if they exist, I think are much further out. We've gone from huge confidence in a Trump put and a Fed put to questioning both. That's been the big change over the last several months or so since the Federal Reserve last met. Your decision is 15 minutes away, and going into it, your equity market looks like this on the S&P 500. Equities here just a little bit firmer, but you know the story over the last 2 months. Since the Fed last met, this stock market is lower by about 6%. In the bond market, 2-year, 10-year, 30-year, your scores look like this at the moment. Over the previous few weeks, just glued to 430. Really tight trading range. On a 10-year at the moment, 431.57. Where you have seen a major change, though, so far this year is in the FX market. To see euro dollar getting closer and closer to 110 in a year, when only a few months ago we were talking about parity, Lisa, all over again. And it comes at a time where people suddenly are looking at a seismic shift in German politics, where suddenly they are embracing fiscal spending, and that has completely changed the game at the same time that people keep going to gold as a potential diversifier, up 10%. You read my script notes over here. That's right where I wanted to go. On the show, folks, I got to quote London Bullion Market Association Gold, or Farrell won't talk to me, but the answer is London Gold. Here's a moonshot, up 19% from the November bottom. Who would have thought we'd be putting gold on planes coming to New York from London? And that would be an economic story. Who saw that coming? No, you're doing that from Bulgaria, right? All I can say is I feel bad for people's backs who have to actually hoist those suitcases up. Do you know how that would be terrible? Like Van Cleef or Bulgaria? Which do you think? All right, TK's got experience. He's the only one around this table with experience of carrying gold bars into London Heathrow. I can see that. Joining us now is Kathy Jones of Charles Schwab, Bob Michael of JP Morgan Asset Management still with us. Kathy, welcome to the program. Decision just around the corner. What are you and the team focused on going into this one? Well, I think we'll be looking very closely at the dot plot. I don't expect the median estimates to change, but there is some risk that given the rise in inflation expectations we've seen in some of the data, that those numbers shift up. And that would be a big shock if we went from expecting 2 rate cuts this year to just 1. So that's something I'm keeping an eye on. I don't think it's a high probability, but you know, inflation expectations are something the Fed's really focused on. And when you look at the surveys, not just the consumer surveys, but the things coming out of the various regional Fed banks, you're seeing a lot of concern about tariffs, price pressures, growth pressures at the same time, and I think the Fed takes those surveys very seriously. So I'm a little concerned that we get this kind of stagflationary signal from the Fed that the market's not really prepared for. Kathy, the Fed has a couple prongs that they could pull today. One of them is indicating how many rate cuts they're expecting on average, potentially, with assuming and suggesting among Fed members later this year. And then there's quantitative tightening. There's a balance sheet that has come down substantially from the all-time high, allowing them to roll off the maturing debt and not reinvest it. If they stop allowing that debt to roll off their balance sheet, would that be more supportive to markets than anything they could do with the front end of the yield curve?
I don't think so. I mean, when we look at quantitative tightening, we don't really see a good correlation with movement in the market. And I think it's a bit more technical than that when they consider ending QT. So it does free up some liquidity at the banks. I'm sure a lot of people will take some excitement from that or view that as a bullish sign. But I really don't think that outside of freeing up a little bit of liquidity with the debt ceiling hanging over us, that's really going to be a big signal for the market. Kathy Jones, 10-year real yield, 2.00%. Nice, convenient number. What does that signal to you, and where will it be 6 months, 12 months out? Well, I think a signal now, you 2% real yield. That's pretty much narrow long average. It might be a little bit lower than it was in previous decades, but for this market, 2% real yield is pretty attractive. And I don't know that it's going to change a whole lot going forward. I would think it might come in a little bit if we get sort of expectations on inflation down. But by and large, I think 2% to 2.5% is a pretty good spot for real yields to be at the longer end of the curve. If the Fed, Kathy, puts out projections that type tendencies or trends baked within them, what does a Fed put look like going forward? I think, if we believe in a Fed put, I'm not sure I believe in a Fed put, but if we believe in a Fed put, it really has to be more about if we run into an economic problem that the Fed has to act to counter. And so I don't know that there's a signal that we would see in this kind of a meeting, because we're not into an economic downturn of such magnitude that they have to, it's down from the highs, but it's clearly still pretty high. And the economy, although it is slowing and we see some softness underneath the surface, it's not collapsing. There's no crisis at the moment addressed. The Fed puts, so I think they would really like to reserve that for some sort of crisis situation or a very serious situation that weakness, say, in the financial markets would somehow transfer into the real economy. But at this moment in time, it doesn't seem that bailing out a market at this level makes much sense for the Fed. Let's build on this conversation and bring in Aditya Bave of Bank of America. Aditya, welcome to the program. Was reading your research over the past week or so on this Fed decision. You said the power put is not forthcoming. You're anticipating a stagflationary mix in some of the forecasts they unveiled in about 9 minutes' time. Let's talk about those forecasts together, Aditya. So in the SEP last time around, the 2025 GDP forecast was 2.1%, unemployment rate at about 4.3, PCE, core PCE 2 dot plot, basically signaling maybe 2 cuts for 2025. What do you think about all of that ultimately changes in the next 10 minutes or so? Good afternoon. Thanks for votes to be marked down a little bit to 1.8%. I think they can do that without getting particularly political, because they can just say, look, this is just a reflection of the expected weakness in first quarter GDP, right? And then on the inflation side equally just as a reflection of the last 2 months of data, which really have been quite disappointing without any tariff impact. We really want to see what they're thinking. Where they don't want to tell you what they're thinking, look at the distribution of risks. We think the distribution of risks at the back of the SEP will show a meaningful shift towards weaker activity and higher inflation. Which raises a question of how they can respond to this. This is the nightmare of central bankers around the world. Stagflationary-like kinds of trends. How do they
they message that they want to support an ongoing recovery while countering some of these trends while remaining non-political? Right, so here's our framework for this. We understand that stagflation pulls their two mandates in opposite directions. So then you have to ask, where do you have buffer? We think you have buffer on the activity side of the economy with the labor market close to full employment, with growth well above trend, and financial markets at least starting this period of weakness already above trend. That's why we think that it's going to be very difficult for them to cut unless there are quite significant risks of a recession, which we don't see. And that's why we don't have them cutting any further. Bob Michael, I'm going back and forth here between the dots in my bracket, and I'm really having trouble here. I mean, both of them are struck dots right now. I don't know how you do it in a normal time. How do you construct a Fed estimate of picking gain? Is like picking the bracket? Well, I think they've told us they believe that the neutral Fed funds rate is much lower than where they currently are, so their bias is to look for an opportunity to bring rates down. I think Aditya is right. I disagree with them all year. They may not cut rates, but I think over the years they're not going to have an opportunity to cut rates. But they're going to bring them down. We're going to see that in the dots. Is the dispersion going to widen today? To me, that would be the shock. I just don't see that. But is it the spread of the dots today? Yeah, I think it has to. I think there will be those who are hawkish that will be concerned about inflation, and there will be those who are dovish that will be concerned about rising unemployment, and that's the opposite pole that Aditya talked about. Just gauging how market participants, TK, feel about this over the last couple of weeks or so. The hawkish risk here, and I'm sure, Bob, you might agree, the hawkish risk here going into this meeting is that you downgrade your growth outlook. You have to push the unemployment rate up for the next year or so, and the median dot stays the same and still signals 2 cuts. That would be a hawkish development, and that's the risk for this Federal Reserve. They do nothing, they try to do nothing, the rest of the world changes around them, and doing nothing, the meaning of that changes. Is that the hawkish risk going into this one?
I'm not so sure that's entirely hawkish. I think the market is more or less expecting that. I think if they bring down rate cuts to one cut, that would be particularly hawkish. That would worry me. And then I would be concerned that they're actually not expecting inflation to be temporary. They're not looking through it. They're concerned that it will be entrenched at these levels. On the flip side, Naditya, I'd love your thought on this. If they are somewhat dovish and they do feel like, or they give the sentiment that they are more concerned about weakening growth than inflation, does that lead to a massive sell-off in the long end of the yield curve? I think that's going to be very positive for risk. So let's start with that. And, you know, on the long end, it's mixed because it also depends on what happens with QT and so on. But that I think would be a very, very encouraging thing for risk assets, although nothing that they've told us to date suggests that they're going to go in that direction, right? I mean, all they've told us is we don't know what's going to happen, and essentially, therefore, we are frozen where we are. Well, Bob, you're nodding, but I wonder, at a certain point, we talked about how after they cut by 50 basis points, we saw a huge rise in 10-year yields, and people said, oh, they made a policy error. Well, why wouldn't this sort of fear of doing that again prevent them from taking a more dovish tilt, at least in the near term? Because I think back then the market was very excited that they would be on a path to 3%. And then you started to see how the election was going to evolve. You saw the policies coming out of that, and people reversed. We're going to 3% to, you know what, we'll probably stay in the 4 somewhere. And that got priced into the market, and the Treasury market adjusted to that. I think it was that simple. I think actually the Treasury market's in pretty good tune with the Fed. The Fed's in pretty good tune with the data. The question is, what will the data be 3 to 6 months from now? The sentiment, or will it all have changed? My head question, Kathy Jones saved me here. With the unusualness of the moment, what do you do with a portfolio duration or maturity? How do you nudge that? Which way do you move? We're pretty, pretty much hugging the benchmark. So for us, the benchmark is the ag. It's around 6 years. You get a 460. Has thoughts. I'm sure he joins us in just a second. Let's turn to the bond market. They are now just about unchanged, around 430. So we haven't broken out that range, that very tight trading range over the past few years at 4.03%. There's a lot of conflicting stories, a lot of 4.03%. There's a lot of conflicting stories, a lot of cross currents to this decision here, Lisa. You've got stagflationary mix in the forecast. The median dot remains the same, implies 2 cuts for 2025. And then you're slowing down the balance sheet runoff at the same time. This is going to be a really tough news conference to navigate for Chairman Powell. With those forecasts, it gets harder. Especially because he's not giving any explanation as to why they are pausing quantitative tightening. He has to explain why they are changing their forecast and why they haven't changed how many times they expect to cut rates. How do they balance these two risks at a time where, again, stagflationary-like scenario bank? Buried in the headlines is a single one. FOMC median this year unemployment projection rises to 4.4%. The moment that overshoots, the dialogue changes. I don't know, with all of our esteemed guests, John, I'll let you decide. Is 4.5 a trigger point? Is 4.7? To me, it's a round number, 5%. But I'm sorry, 4.4% is emotionally for President Trump a long... We have to be really patient about how we process and internalize what the Federal Reserve is telling us this afternoon. I often say when we get a Fed decision or economic data, these are the market moves. Let's see if they... stick. These are the market moves. We'll see if they stick. I don't think the market moves right now should shape the narrative too much. Just take a step back. Don't even look at the market. The Federal Reserve is telling you that they've had to dial back growth expectations, but that won't lead to lower interest rates. The Federal Reserve is telling you that on the
margin, unemployment's going to be a little bit higher. But relative to what we thought back in December, that doesn't mean additional interest rate cuts. On the surface, looking at that alone, and I know there's a lot more going on here, that's a hawkish decision from the Federal Reserve. On the margins, this is them saying that they need to prioritize inflation just as much as unemployment rising to 4.4%. And that right now, the market's grappling with at a time where inflation is as much of a risk to asset prices as is potentially downward growth. I'm looking, John, a message just in from Drew Mattis of MetLife. He's getting closer to being a net buyer of treasuries again. I told him to call Bob Michael. Bob Michael's with us now from JP Morgan Asset Management. Bob, we gave you some time to go over this one. What are your thoughts? This is a dovish Fed. When I look at how they changed their expectations, they lowered GDP by more than they raised inflation. That's tip number one. You look at unemployment, they're worried about how businesses will respond. So they raised unemployment. That's tip number two. And then they said, I believe, uncertainty around economic activity increases. Think if you're in corporate America and you hear that, what do? You stop spending and you hold all the capital you can. This is a very dovish Fed. Put your interest rates where your mouth is, not you, Chairman Powell. Why have they kept the median dot unchanged? What's that about? If they are that dovish, if you're downgrading growth, shouldn't you back that up with a lower median dot? Well, I think that they're comfortable with the 2 dots where they are. It's 2 more rate cuts. I'll take it. Jim Bianco of Bianco Research can get in on the conversation. Jim, I'd love your thoughts on this situation. We talked about it, lots of cross currents, lots to process. Where do you stand on what we've just heard? Yeah, I agree with a lot of what Bob was saying about that nominal GDP came down. In other words, they cut the real growth more than they raised the inflation rate. But I think ultimately, I've termed this the meeting before the meeting. I think the most important meeting for the Fed is going to be the May 7th meeting. All right, they cut their forecast. We've got the histrionics of a 10% correction. We're all talking about tariffs. If we get to that May 7th meeting and they do not find a reason to cut rates, they're not going to find a reason to cut rates this year unless something else comes that we don't expect. And I think when you look at the market right now, at least the initial reaction in Fed Fund futures and the like, is that they're not going to cut rates at that May 7th meeting. So we'll have to see what transpires in the press conference that kind of gets us going there. Because like I want to emphasize it again, what more would they need to see at May 7th that they already haven't if they go to that meeting and they don't cut it? So this is the meeting before the meeting. There's also a question about just how much inflation expectations are going to tick up and what the signal is from them pausing the quantitative tightening program. Jim, it's in the weeds. We've heard from Kathy Jones that's just a technical adjustment. It's not going to make that big of a difference. Does it represent something more to you? Yeah, only in the extent that a lot of the quantitative tightening, you know, the rolling off of the balance sheet was that they weren't buying mortgages to the extent that they used to. And that has become a bit of a political football for the Fed. In the era of high mortgage rates, they seem to be backing off and trying to support lower mortgage rates. Well, now they're trying to do that by, so I think that there is going to be, some issues with that, and there's going to be some discussion about why they did it. And I hope he's asked, and I'd like to hear a good explanation for why, because obviously it wasn't a unanimous decision. Fed Governor Waller dissented from it. Jim Bianco, to give you a victory lap on the last time the White Sox won 3 games in a row, you nailed transitory inflation. You nailed the stickiness of it. If we get inflation to come in with this low growth estimate, how will the Fed respond to that? I'm afraid, that it's going to be more like what we saw in September. That when the Fed, I'm in the camp that when the Fed cut rates by 50 basis points in September, the bond market looked at it and said, look, you're not serious about inflation, so we're not serious about the bond market, and yields went up. I know we try to blame Trump and the Trump policies and that, but it turned right on that Fed meeting when Harris was leading in the polls and interest rates started to go up. So it was more about the Fed meeting and them being aggressive. So if they're going to respond to the idea that the economy is slowing but inflation is staying sticky by cutting rates or threatening to cut rates, they run the risk of the same reaction again. You want to produce 5% in the 10-year rate? Well, then, cut rates when the market is still worried about inflation. And I'll remind everybody, we've had 46 straight months now of core inflation above 3%. And the Fed keeps talking about their target being below 2. We can't get core inflation below 3
let alone get to their target of 2%. And if they start cutting rates again, they run a very big risk of a bad reaction. Jim, how does an explosion of fiscal spending in places like Germany and China complicate the story when suddenly there's a lot more competition around the world for the dollars or the currency to fund people's deficits? Well, I think the first thing you'd have to look at is, the example that we had with the CARES Act in 2020 with an explosion of fiscal spending was inflation. And I think you're probably going to see an uptick of inflation in Europe, and that's going to reverberate through everywhere. Remember, when we had our uptick of inflation, so did they. I suspect if they have an uptick of inflation, it will come back to us, not $1 for dollar, but we'll see an upward push of inflation. And I also think that that's also going to attract capital to Europe, markets where we were above 20. So they're a cheap market, and now they're stimulating, and they're willing, and at least equity investors will be willing to tolerate more inflation, but bond investors won't. So I think you'll start to see higher, you'll see those higher rates in Europe continue, higher inflation rates, and that will come back and be more problematic for the Fed if they want to cut rates later on this year. Hey, Jim, appreciate your time. As always, buddy, Jim Bianco there of Bianco Research. Miami Keys runs the news conference in about 20 minutes' time. He writes in, look closely at the dot plot. 8 members now see 1 cut or fewer. That's up from 4. Only 2 now see 3 or more. That's down from 5. It won't take much to move the median in the other direction. This is where I'm struggling with this decision. I feel lonely around this table. I see stagflation readjustments in the forecasts. I see a Federal Reserve that's not accompanied a downgrade to growth with an upgrade to the amount of cuts we'll get this year. In fact, quite the opposite. And they're telling you things are really uncertain right now. So it's not obvious. To them how they would respond to adverse shocks in the economy. That's a change for this Federal Reserve. Typically, it goes something like this. Growth's bad, we can respond. We're not constrained because inflation's going to be lower. That's not what they're forecasting right now. Now, this can all change in the news conference. Maybe Chairman Powell could explain this in 15 minutes' time. But I just sit here and I just say, look, if I didn't see the market, I'd be sitting here thinking that was a very hawkish mix from the Federal Reserve. I know I'm very lonely. Jim disagrees, Bob disagrees, but that's what I see right now. You're not so lonely. There is a shift in the mentality around the Fed right now, which is that disinflationary process is squarely on its trajectory downward, is no longer valid. That has been a shift, and they can no longer count on that to allow them to just unabashedly respond to downside growth shocks. And that is what you're seeing reflected in those dots. And on the margins, that's hawkish, because they're not going to necessarily come to the rescue in that. That said, do people believe these dots, et cetera? And, that's another story. So that's, I think, where maybe people are leaning some of their confidence. Well, is stagflation bullish risk assets? No, it's not. It's a pernicious ingredient into risk assets. So, what can you take away from the fact that this is a stagflationary mix to the adjustments of the forecast from the Federal Reserve, and they seem to be very uncertain about what to do with policy? Well, when was the last time they were in this position? It's an expected stagflationary environment, Fair and point. we're not in it now. And I think when you talk to a lot of corporate managements, you'll find that they're pretty guarded and sanguine about what they're doing. So I do worry that if what we expect to happen actually happens, then the response. From Dan corporate Swank America of KPMG is going to jump in on the conversation. Bob's going to stick with us. The news conference starts in about 16 minutes' time. Dan, you've had 14 minutes to pore over all of this. What jumps out for you? I actually am on your side of the equation here. I think this was much more hawkish, and the Fed not quite going to 1 rate cut, but the number of people who are expecting 1 rate or less cut this year going up. That gives you that sense of the dispersion of risk, and the challenge of corralling the
जी तो तमाम दोस्तों, आपने एनालिसिस देखे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये लिक्विडिटी स्वीप, ये एरिया स्वीप होने दे, फिर हम देखेंगे कि सेल करना है, ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट हम सेल नहीं कर सकते, बेशक ये इधर से ही रिजेक्ट हो जाए, ड्रॉप दे दे, लेकिन मैं तो सेल नहीं करने वाला। जी तो ये ओटी से ही गिर रहा है, ओटीई। अब ये ओटी क्या है, जो फीबो मैंने आपको लगा के दिया था, तो उसमें देखें जो 79 वाला जोन है वो ओटी का एरिया है। ओटी से पहले टैप करके ड्रॉप हुआ, उसके बाद दोबारा इसने टैप किया और रिजेक्शन दे रहा है। H1 की कैंडल है। अगर मैं 15 की कैंडल देखूं, चेक करें ये ड्रॉप क्यों दे रहा है। ड्रॉप ये जस्ट मेरे मुताबिक तो ये रिट्रेसमेंट पकड़ रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह से इक्वल टॉप आ जाता है तो ओटी भी है साथ, तो इसको इस कंप्लीट इम्बैलेंस का रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। इम्बैलेंस को ट्रेड करने का तरीकाकार क्या है कि आपने इसका 50% मार्क करना है, ठीक है, जो कि तकरीबन ये है, ठीक है। तो 50% पे जब प्राइस आएगी तो फिर जो है इम्बैलेंस वाली कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, और इस जगह पे लेना चाहो आपकी मर्ज़ी, थोड़ा सा नीचे आने दो तो फिर वो आपके ऊपर है। ठीक हो गया। तो किस तरह की लगी, कैसी लगी आपको एफएमसी की ट्रेड? खैर कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं था, तो उसी रेंज में ही प्राइस रही, ज़्यादा मूव उसने नहीं किया।
बस ये है कि जो मैंने स्ट्रक्चर मैंने बताया कि पहले इसको बाय जाना चाहिए, मतलब कि ऊपर की तरफ, और ये एरिया स्वीप करना चाहिए, फिर हम सेल देखेंगे। लेकिन ये उसी रेंज के अंदर ठहरी है, कोई ख़ास रेस्पॉन्स उसने नहीं दिया, आप चेक कर सकते हो। मैं इस फिबो को रिमूव करता हूँ और इसमें देखो एक ये लाइन है और एक नीचे, ये एक कंप्लीट रेंज है, ठीक है। और अगर मैं H4 का या H3 का टाइम फ्रेम देखूं तो ये क्या है, कंप्लीट एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट ठहरी है। कोऑर्डिनेट्स कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट, ये बराबर, ये देखें ये रेंज है। अब जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक गोल्ड कुछ नहीं कर सकता। रेंज अब ये अगर नीचे ड्रॉप देता है, H3 का टाइम फ्रेम है, 3H का, नीचे ब्रेकआउट देता है, कैंडल क्लोजिंग नीचे होती है, तो ये मूव आपको ट्रेड करने को मिल सकता है और ये आप आराम से आसानी से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है ये 3028 का एरिया है, 29, 28, 29 का। अगर 27 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो रिट्रेसमेंट के बाद गोल्ड की जो प्राइस है वो ड्रॉप जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर मैं सेल नहीं करूँगा, ना बाय करूँगा, मैं वेट करूँगा एरिया स्वीप का। एरिया स्वीप हो जाए तो फिर पहली बेरिश कैंडल के ऊपर मैं फिर सेल लूँगा, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है सेल करने का या फिर बाय करने का। और अगर असूल के मुताबिक चलोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, वरना लॉस में रहोगे। बाज़ औक़ात मैं खुद लॉस में चल रहा होता हूँ, वो इसी वजह से कि भाई जल्दबाजी कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेटअप पे रहें, सेटअप मिले तो ट्रेड करें, नहीं मिलता तो सब्र करें। और अगर लॉस में है तो कम से कम ये 1 मंथ खुद को दें, दोबारा स्टडी करें कहाँ कहाँ आपने लॉस किया, क्या क्या गलती की। और आजकल मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो लाइव स्ट्रीम इधर ही एंड करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे, लाइव स्ट्रीम हमारी अच्छी लगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो, 200 तक चैनल को रेफ़र करो, शेयर करो, ठीक है। और जितना आप लाइव स्ट्रीम पे बैठोगे, सवाल जवाब करोगे, आपके सवाल के हम जवाब भी दिया करेंगे और साथ साथ आपको लर्निंग भी कराया करेंगे। इधर ही SMC आपको सिखा देंगे, कोई आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे 1-on-1 मेंटोरशिप चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ क्लास में, बाकी कोई ना हो, तो 1-on-1 क्लास भी अवेलेबल है। स्क्रीन के नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा व्हाट्सअप का, मिड में लेफ़्ट साइड पे टेलीग्राम का चैनल है, सिग्नल चैनल, राइट साइड पे आपको इंस्टाग्राम हैंडल नज़र आ रहा है। तो तमाम पे आप जाएं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये दोनों ज्वाइन करें। और उसके बाद अगर आपने मेंटोरशिप लेनी है SMC ICT की या फिर कुछ मॉडल्स तैयार कराने हैं तो फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं।